Assalamualaikum students, welcome to the third video of chapter 10 Air. In this video, we will cover the bookwork and copywork of the chapter. Let's move on. First, we'll do the bookwork. Open page number 72. Now, you need to fill in the blanks. There are certain sentences given and there are blanks. Some words are in blanks, so you need to figure out what to put in the blanks. So we'll read them one by one. Air is a mixture of many dash. What is air a mixture of? Air is a mixture of many gases. So in the blank you can write gases, G-A-S-E-S. Okay. Next, air contains water dash. Air के अंदर water का क्या होता है? Water vapors होता है. So we'll write vapor in the blank, V-A-P-O-U-R. Air contains water vapor. Next is air contains dash particles. Air के अंदर छोटे छोटे से कौन से particles होते हैं? Dust particles. So air contains dust particles. D-U-S-T, dust. Okay. The last one is we need dash to breathe. What do we need to breathe? We need air to breathe. So we'll write that A-I-R, air. Okay. Now these are the fill in the blanks. Moving on. Move to page number 74. You will find a similar exercise of fill in the blanks. We'll read one by one again. When air moves gently, it is called dash. अगर एयर हल्के हल्के से चल रही होती है, हवा हल्के हल्के से चल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज. Okay. So in the blank we'll write breeze. B-R-E-E-Z-E. Okay. So when air moves gently, it's called breeze. Next, when air moves fast, it is called dash. जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? Wind. तो we'll write that. When air moves fast, it is called wind. Wind is spelled as W-I-N-D. Next, when air moves very strongly, it is called dash. जब बहुत तेज हवा चल रही होती है जिसमें कि अक्सर दरख्त उड़ जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ जाती हैं, that is called a storm. So we'll write that S-T-O-R-M. When air moves very strongly, it is called storm. Okay, now next page number 75. Okay, now we can see exercises, exercise A and exercise B. We'll do them one by one. In exercise A, fill in the blanks with correct option. यहाँ पे हमें दो option save हैं after every sentence and we need to pick the right option. Number 1, we need air to dash, eat or breathe. Do we breathe with air or do we eat with air? We breathe with air. So the correct answer is breathe. You can put a tick mark on breathe. Air has dash, food, water vapors. What does air have? Food या water vapors? अभी हमने बोला कि हम breathe करते हैं, eat नहीं करते. तो air has water vapors. Okay, so put a check mark on water vapors. Number 3, when wind blows, it carries dash with it, dust or doors. जब wind क्या होती है? Wind तेज हवा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती. So it can only carry dust. Doors कब उड़ने लग जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता उड़ते हैं? जब storm आएगा. ठीक है, कि वो doors उखाड़ के ही ले जाता है कहीं कहीं के. तो over here we are gonna pick dust. So when wind blows, it carries dust with it. Dust के ऊपर check mark लगा देंगे. Number 4, we must breathe dash air to remain healthy. अगर हमें healthy रहना है, so we were talking that अगर हमें healthy रहना है तो हमें clean air चाहिए होगी, right? या stale air. हमें clean air चाहिए होगी. So the correct answer is clean. We must breathe clean air to remain healthy. So you put a check mark on clean. Number 5, dash are tiny living things floating in air, vapors or germs. Tiny living things जो होती हैं वो germs होती हैं, सही है? So germs are tiny living things floating in air. So germs के ऊपर हम check mark कर देंगे. Okay. The last one, number 6, is wind pushes the water in the rivers and the seas and causes dash. Wind जब water को push करती है, rivers हो गए, seas हो गए, तो उनमें क्या produce होता है? उनमें waves बन जाती हैं, सही है? So breeze or waves में से the correct answer is waves. We put a check mark on waves. Now moving on to exercise B. Cross out the wrong option to give the correct answer. Okay. So इसमें क्या करना है आपको कि wrong के ऊपर cross लगाना है और right के ऊपर आपको check mark लगाना है. Okay. So in this number 1, we can या cannot see air. So we cannot see air. तो cannot पे हमने check लगा दिया है और can पे हम ऐसे x लगा देंगे. Okay. Number 2, when we burn something,
smoke or dust comes out of it. जब कुछ जलता है तो उसमें से smoke निकल के आती है, ये dust, smoke, सही है. So smoke is the right option, उस पर check लगा देंगे. And dust के ऊपर we will put a cross. एक second, I'll just make it better. We will put a small X over dust. Okay. Number 3, we should or should not breathe in smoke that people release while smoking. So we should not breathe in smoke that people release while smoking. सही है. तो should not पे हमने check लगा दिया और should पे हम छोटा सा फिर से X लगा देंगे. Okay, cross कर दिया उसको. Number 4, wind or water makes clouds move. What makes clouds move? Wind makes cloud move. So wind पे check लगा दिया and water को हम cross कर देंगे. Okay. Number 5, breeze or wind moves sailboats on water. तो breeze तो बहुत light होती है. So wind moves sailboats on water. ठीक है. तो wind सही है, उस पर check है and breeze पे we will put a cross. Okay. Number 6, wind or wave makes the fan of a windmill move. तो windmill का fan कैसे घूमता है? Wind से. Okay, it's a windmill. So wind is the correct option. उस पे हमने check कर दिया और wave को हम cross out कर देंगे. Okay, just like that. Moving on. This is page number 76. इसमें what we have to do is find the following words in the search box. ये नीचे search box दिया हुआ है, इसके अंदर हमें ये वाले words ढूंढने हैं. Okay. I'm doing the first two for you. For wind, यहाँ पर है नीचे WIND. Okay, then we've got smoke, SMOKE, ये smoke है. Then we've got storm यहाँ पर हमें down में मिल जाएगा. Wait a minute. ये storm हो गया. Then we've got breeze ये रहा. So we're gonna find it. Then we've got dust ये रहा. ठीक है. And then the last one is wave is here. You can do it on your own in your books. Okay. Now moving on. Now we move on to question and answers, which should be done in the copy. अपने copy में title page और index. So write the questions with blue pencil and answers with black, your regular normal pencil. Number 1, why do we need air? हमें air क्यों चाहिए होती है? So the answer is we need air to breathe. हमें air इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमें इसमें सांस लेनी होती है. We need it to breathe. So the answer is we need air to breathe. Question number 2, what does air contain? The answer is air के अंदर क्या क्या होता है? Air contains many gases, water vapors, dust particles, smoke and germs. एयर के अंदर क्या क्या होता है? गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, देयर इज स्मोक एंड देयर इज आल्सो germs. Now if you think that we're going too fast, you can pause the video on this screen and write down the question and answers. Okay, question number 1 और question number 2 का आप कॉपी कर सकते हैं and move on. Question number 3, how do germs mix with air? Germs air में कैसे mix होते हैं? When people cough or sneeze without covering their mouths, the germs from their bodies come out and mix with air. जब लोग खांसते हैं या छींकते हैं अपना माउथ बगैर कवर किए तो उनके अंदर जो germs होते हैं जिनकी वजह जो उनको कॉफ या स्नीज करवा रहे होते हैं वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं. सही है, क्योंकि देयर स्नीजिंग तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू या किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं and then they get mixed with the air around them और वो उसी एयर को वो कंटामिनेट कर देते हैं. सही है. So we can see this आजकल भी, इसीलिए we say कि हमेशा मास्क पहन के रखें जब भी आप बाहर जाएं, because if you are sneezing or coughing or if somebody else who has the virus and is sneezing and coughing, तो अगर उनके मुंह से वो germs निकलते भी हैं तो उनके मास्क तक रहें, आप तक ना पहुंचे. सही है. That is why, or if there are germs in the air, so they don't go inside our body. That is why we wear a mask. So the answer to question number 3 is when people cough or sneeze without covering their mouths, the germs from their bodies come out and mix with air. Okay. Question number 4, why should we plant more trees? हमें ज़्यादा trees क्यों लगाने चाहिए? So the answer is we should plant more trees to get clean air.
ताकि हमें क्लीन एयर मिल सके, अच्छी साफ एयर मिल सके, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्लीन कर देते हैं. सही है. सो द आंसर इज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू गेट क्लीन एयर. Over here too, you can pause the video and write it down. Okay, and move on to the next questions. Question number 5. What is breeze? The answer is gentle air is called breeze. अभी हमने बात की थी कि बहुत सॉफ्ट और हल्की जब हवा चलती है तो उसको हम breeze कहते हैं. So gentle air is called breeze. Question number 6. What happens when there is a storm? अगर storm आता है तो क्या होता है? A storm can uproot trees and damage buildings. Storms at sea can sink ships. तो अगर storm आता है बहुत जोर का तो uproot trees मतलब trees को जड़ से उखाड़ देता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकता है, जैसे उसकी विंडोज या डोर्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं, उड़ सकते हैं. Storms can sink at sea can sink ships. और अगर समंदर के इलाके में जो है वो स्टॉर्म आता है तो वो क्या करते हैं, कश्तियाँ या बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो ही डूब जाती हैं. So a storm can uproot trees and damage buildings. Storms at sea can sink ships. Okay. What is a weathercock used for? So a weathercock जो है वो usually पुराने ज़माने की buildings के ऊपर लगा होता था. And what was it used for? The weathercock tells us the direction of the wind. वो जिस तरफ wind होती थी, हवा चल रही होती थी, वो उस तरफ घूम जाता था और उससे हमें ये पता चलता था कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ की है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रही है हवा. So the weathercock tells us the direction of the wind. Okay, now this is the end of the question and answers. Now this is the end of your chapter and we have covered the reading and the book and copy work. Now I want you to learn the book and copy work of the chapter. I will see you in the next video with another chapter.